हेलो गाइस, माय नेम इज Arghadeep एंड वेलकम टू अनदर फाइनेंस वीडियो। चलिए आज का दिन पकड़ते हैं 26 सितंबर। सेंसेक्स इज डाउन बाय ऑलमोस्ट ओवर 2%, निफ्टी इज ऑलमोस्ट डाउन बाय 2%, बैंक निफ्टी इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 2.5%। व्हाई आर द इंडियन मार्केट सो डाउन? क्यों इतना डाउन गिरा? एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर टुडे, सिंस द लास्ट 4 days सेंसेक्स हैज शेड ओवर 2000 पॉइंट्स। इतना गिर चुका है सेंसेक्स और निफ्टी। नाउ इफ यू लुक एट द डेटा फॉर द लास्ट 2 weeks, the Dow Jones is down by almost 10%. The German index is almost down by 6 to 7%. The London index is also down by around 5 to 6 to 7%. The Nifty and Sensex Indian indices are down by over 5% since the last 2 weeks. Russian index is down by over 20% since the last 2 weeks. रशिया का बात छोड़िए, उसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में और डीप में जाएंगे कि why Russia is down so much, why the condition of the Russian market is even worse than the other world markets. So basically what we are seeing is that the world markets are in a terrible condition right. दुनिया का हर कोई मार्केट गिर रहा है. Why is that happening? ऐसा क्यों हो रहा है कि almost for an almost 1 month, for almost 2 to 3 weeks, all the world markets are going down, down, down. Why is that happening? सबसे important reason है inflation. हम लोग we are hearing for the past several months that inflation is high, inflation is high, inflation is high. So how are the countries responding and reacting to this increased inflation? See, inflation rate is higher than expected. For that reason, all the central banks of every country, the Fed, you have heard कि आज यूएस में फेड रेट ने इतना बीपी पॉइंट्स बढ़ा दिया, इतना बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया। आप नोटिस करोगे कि यूएस में हो रहा है कि द फेड्स हैव इंक्रीज्ड सो मच 75 बेसिस पॉइंट्स। इंडिया में इंक्रीज हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? सी, बेसिस पॉइंट्स, द आरबीआई बेसिस पॉइंट्स बेसिकली देखिए, समझिए कि इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए द सेंट्रल बैंक्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स टू फाइट द इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन. सिंस द इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन इज हायर देन एक्सपेक्टेड, द इंटरेस्ट रेट जो इंटरेस्ट रेट हाइक होना था, दैट इज ऑल्सो हायर देन एक्सपेक्टेड. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन द इंटरेस्ट रेट गेट्स हाई? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, ये जो हम लोग लोन लेते हैं, ईएमआई लेते हैं, when you have to repay, ये जो companies they take loan from the bank, we customers take loan from the bank, maybe the EMI, the repay, हम लोग जब repay करते हैं, we have to pay a certain interest rate. और जब interest rate बढ़ता है, तो instead say let's say I am borrowing 10 rupees, instead of paying back 11 rupees, I now have to pay 12 rupees. And what happens when I have to pay more money, when I have to repay more money, I will spend less. Simple सा बात है. अगर मुझे रिपे ज्यादा करना है तो यार मैं खर्चा ही कम करूंगा, आई विल स्पेंड लेस. सो दिस इज व्हाट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट. द स्पेंडिंग पावर ऑफ एवरी इकोनॉमी इज डिक्रीजिंग बिकॉज द पीपल आर स्पेंडिंग लेस सो दैट दे डोंट हैव टू रिटर्न मोर मनी, दे डोंट हैव टू रिपे मोर मनी. एंड व्हेन द स्पेंडिंग पावर, जब लोग खर्चा कम करता है, व्हाट हैपेंस? द बिजनेसेस गेट्स अफेक्टेड. Businesses are making less profit, businesses are making less revenue. और जब business down जाता है, जब when the businesses are making less money, what happens? The market falls down. समझ में आ रहा है ना? देखिए, interest rate increase हुआ, we as a person, we as a company, see, person or company, we take loan from the bank, and because of the increased interest rate, we have to now repay the bank more money. For that reason, we are taking less money from the bank, we are spending less. And what happens when you are spending less? The businesses are making less money. And what happens when the businesses are making less money? That is a negative news for the stock markets. Hence the stock markets are falling down. ये हो गया एक रीजन. चलिए दूसरे रीजन में जाते हैं. You guys are seeing कि USD constantly increase हो रहा है, USD बहुत बढ़ रहा है, but the INR is getting weak. चलिए USD क्यों बढ़ रहा है? देखिए ये एक छोटा सा वीडियो, एक ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए व्हाई द मार्केट्स आर गोइंग डाउन. एवरी रीजन का सब डिटेल्स में आई कैन नॉट गो, अदरवाइज दिस वीडियो विल बी इजीली ओवर 1 hour लॉन्ग. तो बेसिकली आप ये समझिए कि यूएसडी इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग. मैं बैंक में 10 रुपया रख रहा हूँ. लेट्स से द ओल्ड इंटरेस्ट रेट इज ₹X. फॉर कीपिंग 10 rupees एट द बैंक, आई वॉज गेटिंग 1 rupees इंटरेस्ट रेट, 1 rupees इंटरेस्ट एवरी, जो फिक्स डिपॉजिट है 1 rupees. नाउ with the increased interest rate, let's say the increased interest rate is Y, and now I am getting 2 rupees interest. And since the US is increasing the interest rate most, US बहुत sharp increase कर रहा है उसका interest rate. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है?
the US banks are giving out more interest to all the FD and all this. तो इसीलिए the people are putting more money in the US bank and that is why USD is getting stronger and stronger. ये होगा USD. अब जब USD बढ़ेगा, USD स्ट्रॉन्ग होगा तो INR ऑटोमेटिकली गिरेगा. INR गिरेगा. INR कितना था? 75, 76 ऐसा था ना INR आज से कुछ महीने पहले. Now the INR is almost at 82 rupees. 82 rupees. और how is that affecting our economy? इसके वजह से इंडियन इकोनॉमी का इफेक्ट है. सीखिए, सिंपल सा बात समझिए. इंडिया इंपोर्ट्स मच मोर देन शी एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट जितना करते हैं इंडिया उससे बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट करते. नाउ लेट्स से 6 months ago a $1 import costs India 75 rupees. Now that same $1 import is costing India 82 rupees. The companies have to spend more to import that same stuff from outside. इंडिया में जो बाहर सब कुछ USD is the standard currency all over the world. So whenever India is importing something, she has to import it in US dollar. So now the companies, because of the degrading performance of the Indian rupees, the Indian companies have to spend more to import that same stuff. So for that reason, to balance the revenue, to balance the earning of the businesses, are increasing the price of their product. उसके वजह से क्या हो रहा है? हम लोगों को खरीदने में जो लोग, लेट्स से हम लोगों को एक चीज खरीदने में 10 रुपया लगता था, अभी सपोज लेट्स से हम लोगों को एक चीज खरीदने के लिए 10 रुपया लगता था, अभी वो 11 से 12 रुपया लगता है. सो टू बैलेंस दैट इंक्रीज्ड इंपोर्ट एक्सपेंस, द कंपनीज आर इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट. सी, इन्फ्लेशन की वजह से हम लोग क्या जानते हैं? इन्फ्लेशन की वजह से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ते हैं. सी, यही हो रहा है ना. इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. फॉर इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट यूएसडी इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग. और स्ट्रॉन्गर यूएसडी, हमारा देश का जो चीजों का प्राइस है वो बढ़ रहा है. एंड सी द साइकिल कंटिन्यूज. ये हो गया 2 रीजन. अब चलिए तीसरे रीजन पे जाते हैं. ठीक है, तीसरा रीजन ये हो सकता है कि यूएस बॉन्ड्स आर यील्डिंग हायर रिटर्न्स एंड सिंस बॉन्ड्स आर एब्सोल्युटली सेफ, यूएस बॉन्ड्स आर वेरी सेफ, और ऊपर से दे आर यील्डिंग हायर रिटर्न्स, ऑल द FIIs एंड ऑल दैट, they are pulling out money from the Indian market. They are taking out money from the Indian market and keeping it and putting it in US stocks. इसलिए मार्केट और गिर रहा है. तो हमारा जो इंडियन मार्केट का जो नेगेटिविटी है, दिस इज अनदर रीजन. ये जो फॉल कर रहा है, दिस इज अनदर रीजन. देखिए, यही कुछ बेसिक रीजन है व्हाई द मार्केट्स आर फॉलिंग सो मच. एंड सी, एक चीज आपको समझना पड़ेगा. द वर्ल्ड मार्केट्स, मेनी पीपल आर सेइंग दैट द यूएस मार्केट, द लंदन मार्केट आर ऑलरेडी इन रिसेशन. चलिए मान लेते हैं कि इंडियन मार्केट रिसेशन में नहीं है. मान लेते हैं, लेट्स से इंडियन मार्केट इज नॉट एट रिसेशन. सिंस इंडिया इंपोर्ट्स सो मच, इतना डिपेंडेंट है बाहर के देशों में, इंडियन मार्केट्स आर बाउंड टू रिएक्ट. सो अगर चलिए हम लोग रिसेशन में नहीं है, लेकिन यूएस, लंदन, ये सब बड़ा बड़ा ये जो मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज, अगर ये रिसेशन में होगा तो इंडियन मार्केट भी रिएक्ट करेगा. इंडियन मार्केट्स आर बाउंड टू रिएक्ट. तो यही कुछ रीजन है जिसके वजह से इंडियन मार्केट, वर्ल्ड मार्केट्स इतना डाउन है. एक और रीजन, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन, रशिया इज अगेन मेकिंग वॉर थ्रेट्स. Russian President Vladimir Putin has recently announced that he is planning a nuclear warfare on Ukraine. War is bad for business, period. और ऊपर से nuclear warfare. इसीलिए Russian economy is down by 20% because war means negativity. And now you guys only guess what does nuclear warfare means? 20% down. That is the reason. ये reason की वजह से Russian index is 20% down. इसी के वजह से. And और ये why is this bad for us in India? India makes a lot of business with Russia. India imports so much oil from Russia. और अगर let's say कल रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया, India can no longer stay neutral. The event of nuclear warfare that is started by Russia, India can no longer stay neutral or even do business with Russia. Because doing business with Russia, उससे जो इंडिया का एडवांटेज होगा, अगर रशिया न्यूक्लियर वॉरफेयर स्टार्ट कर दिए, और अगर रशिया ने न्यूक्लियर वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया तब इंडिया उसके साथ बिजनेस किया, तो इसके वजह से इंडिया का जो बाहर का जो कंट्रीज है उसके साथ जो रिलेशन खराब होगा ना, दैट्स नॉट वर्थ इट. सो अगर रशिया न्यूक्लियर वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया, इंडिया कैन नो लॉन्गर स्टे इन बिजनेस विद रशिया. तब इंडिया क्या करेगा? बिकॉज इंडिया इज ऑलरेडी डूइंग सो मच बिजनेस विद रशिया, इंपोर्टिंग सो मच ऑयल. इंडिया हैज टू लुक फॉर इंपोर्टर्स अदर देन रशिया. So that is such a negative sentiment for Indian markets. That is such a negative point from Indian markets. And also one more thing is this 30th September, it is reported that RBI will increase the Fed rate like the rest of the world. But it is rumored that RBI will increase the Fed rate more than expected. एक चीज मैं आपको समझाता हूँ. The one of the most basic thing about stock market. The stock market always react to future things.
2 दिन बाद क्या होने वाला है उसका रिएक्शन स्टॉक मार्केट आज करे. Since this Friday, 30th September, it is rumored that the Fed rates will be much higher. The Fed rate hike will be much higher than anticipated. For that reason also the Indian market गिरा. वो भी एक reason है. Because see, interest rate hike मतलब stock market के लिए खराब, business के लिए खराब. That's a negative. And since it is rumored कि जो Fed rate hike होगा, that is higher than expected, तो market आज गिरा. That is one of the many reasons. ये reasons from all over the world, ये छोटे-छोटे reasons. All of these reasons are resulting in the downfall of the world markets. Every reason collectively is bringing down the world markets. तो यही कुछ reasons है जिसकी वजह से world markets आज इतना डाउन है. तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशन लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली. इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो विल हेल्प देम, तो डू शेयर and like it, subscribe to our channel for many such informational videos about finance, about economy, and see you guys in the next video. Until then, peace.